Dr. Sasa being here with us. Uh, uh, Dr. Sasa, you heard the previous speakers about how Indian real estate is making a lot of difference. Mr. Chaudhary, you are already part of the Indian real estate. How do you see Indian real estate for foreign buyers? Let's start with that. With Dr. Sasa. First of all, in an outset, I would like to thank Ms. Sapna for inviting me for this very important panel and a fire check, and for organizing this wonderful show. And I saw the developers, they are all very eminent developers from India. And as I did my PhD in leadership, I always say that there are few leaders and rest followers. The number doesn't matter, but the quality you bring on the table that matters. See, when I talk about investment of NRIs to India, there's an organic growth in that. Because see, there are more than 20 million NRIs, excluding those who are from Indian origin. Who are called NRIs are predominantly is a cluster in the Middle East, because even after a long stay outside India, they are still holding Indian citizenship. So they are NRIs. And those who are in the Europe and UK and US who have been accepted their citizenship, but they are still person from Indian origin. So there is another big cluster of big number of that Indian origin who are foreign nationals, but they have roots in India and also want to have something in India. So this combined strength is around 30 million people. So these 30 million are fairly high net worth compared to the average Indian living in India. So they always have the first aspiration to emotional attachment and first aspiration to have a property back home in their hometown or in the tier 1, tier 2 cities near to them. So with that growth, always a demand for the real estate from the NRIs and OCIs are always going to be there. And again, when you see that's addition to the local requirement. And organic, huge local requirements are there because annually 20 million marriages happen in India. So, these marriages are, further creating a demand for housing, demand for, the workspace and everything. So, in this way, in Indian real estate demand is always going to be high. That's one of the reasons we see, such high incremental values in the real estate in India, across span, right from north, south, east, west. Everywhere, we see a uniform demand. Mr. Chaudhary, you are part of Indian real estate. Dr. Sasa mentioned how the entire NRI, 30 million or more, more NRIs are the potential buyers for Indian real estate. India itself has a huge market. How do you see Indian real estate potential? अपनों के लिए कर रहे हैं और अपने आने वाले भविष्य के लिए कर रहे हैं। रियल एस्टेट मेरी नज़र से भारत के अंदर जिस तरह से आज बढ़ रहा है, जिस तरह से भारत के अंदर डिमांड जो जनाब ने कहा सप्लाई या हमारी बेसिक नीड्स बढ़ रही है, आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है। भारत एक उभरता देश है, हर तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हैं। हम लोग पिछले 40 साल से रियल एस्टेट में हैं। आई एम द सेकेंड जनरेशन। मुझे रामरतन ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हुए खुशी ये भी हुई कि दुबई खासकर यूएई जिसने भारत का हर तरह से साथ दिया, हर इंडियन जो आज हमारा यहाँ पे है
किसी भी फॉर्म में, उसको बहुत रिस्पेक्ट और लव के साथ इन्होंने वेलकम किया। तो पहले तो आपके माध्यम से मैं यूएई की जनता को, राजा साहब को और सबको धन्यवाद भी दूंगा, और अपने NRI भाइयों को जो यहाँ पे आज मेहनत करके भारत की शान बढ़ा रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक जहाँ पे आपने इसको रखा, तो हम लोग फार्म कम्युनिटीज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। मेरा मानना है कि डिमांड को क्रिएट करने के लिए भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया में नई पॉलिसी लाई है, नई सोच लाई है कि वो नए नए शहर बसाने की तरफ मूव कर रहे हैं। आज ये बेसिक नीड है। हम लोग दिल्ली से हैं, दिल्ली के बाद गुड़गांव की तरफ मूव किया, गुड़गांव से आज हम लोग NH न्यू बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे की तरफ स्मार्ट सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। प्राइवेट डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट के बाद। तो NRI की अगर हम बात करते हैं, हमारा फोकस है, हम भी चाहते हैं कि जो NRI भारत से आए अपने रूट से जुड़े रहें, अपने मदर लैंड से जुड़े रहें, और पिछले 4 से 5 साल में जिस तरह से कोविड के बाद चेंजेस आए हैं, सोच में, विचार में, हर चीज़ में चेंजेस आए हैं, भारत की तरफ लोगों का मूवमेंट बढ़ा है। और सबसे बड़ा कारण मेरी नज़र में डिमांड सप्लाई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ग्रोथ भारत में आ रही है, कनेक्टिविटी भारत में बन रही है, और जिस तरह से लोकली आप लगाइए हर 50 किलोमीटर के बाद, हर 100 किलोमीटर के बाद एक नया टाउन डेवलप हो रहा है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो लोकली भी नहीं है, वो आने वाले मतलब दिल्ली से बाहर लोग स्पेशली जाना चाहते हैं कि भी उनको एक नया इन्वायरमेंट, नया प्लेस मिले। वेरी गुड पॉइंट। जैसे विजय चौधरी जी ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज बीन वन बिग बूस्टर फॉर इंडियन रियल एस्टेट। नए सिटीज खुल गए हैं, बट डॉक्टर साहब कमिंग बैक टू यू अगेन, हमने पिछले पैनल में भी सुना कि ड्यू डिलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बायर्स एंड, यू नो मिस सेलिंग भी होता है, पोस्ट सेल्स प्रॉब्लम्स भी होता है। व्हाट आर योर गाइडलाइंस फॉर बायर्स, foreign buyers, if they are buying a property, it could be in India, it could be anywhere. So buyers के लिए आपका क्या है? You know, basically in this, you know, there are 3 major players. One is the developer, one is the broker, and another is the end user. So, you know, the accountability of the developer has fairly been established because now RERA is in place in all the states of India in majority and globally as well. And the due diligence of the investor is also fairly in place because of the investment scores and everything, you know, they get on the performance, and if they have failed anywhere, you know, it will reflect in their scoring. So, you know, that is it. The weak link is the brokerage company in between. And, you know, I will not tell them as a this thing, you know, as a full blame on them, but as a broker is a very important bridge between the developer and the customer. But unfortunately, you know, that link is still not accountable. Let's say, you know, if once the marriage is done, the pandit is out of picture. You know, let the bride and groom solve their own problems. But you know, he is the one to bring the client to the developer. So, and that accountability needs to be established, because the broker, he convinced the client, and upon his convincing, the client views that project from the perspective of the broker, what he explains it. And of course, you know, now as we see that, you know, that super build up and all these things, you know, the jungling going on in the square feet are reduced. If not to zero, but drastically reduced because of RERA compliance and everything. Every project has a RERA number. So all these things are fairly there. So the due diligence for the client has become much easier than it was 5, 10, 20 years back. But still, you know, that the accountability of the broker has to be established to such an extent where, you know, 10 years, we have seen certain projects where after 10, 15 years, it goes into the major refurbishment. After 10 years, the developer is also out of picture, the society manages, and then the burden comes on the residents or the occupants of that, or owners of that property. So, you know, now I see that, you know, most of the good developers, they have their experience center, where they show that what goes behind the wall.
what we see is the paint on the wall, but what goes behind the wall is the plaster, is the what kind of cables are used in that, what kind of MEP is been quality of the MEP is used in that. So everything, you know, now the developers are having their experience center where they call, invite the client and show them that see, these are the things what we are going to use. With the client is not going to see this, the mixture of the concrete and so on. Because see, construction is an industry. Why we term it as an industry? Because there are multi-stakeholders in that. It's not one. As a developer, okay, he is an umbrella, you know, holding that, but under that, there's a contractor and there are 50 subcontractors. So, you know, if everything is in placed properly, then the end result will be proper. So, you know, all these things, the minute detailing, because RERA does not cover all these things. So, all these things now, the developer are because of the competition, the developers are also, you know, creating an education to the client. Come to our experience center and see what we are, and if there is any variable what you see on the deliverables, you can challenge them. So all these things have created a good system where the client can select their own property or, you know, based on the deliverables of the developer. Correct. So for buyers, they need to go through what are the deliverables. Probably if a developer has an experience center, experience that project, you know, and don't shy away with questions because obviously you are making such a big high-ticket investment. Mr. Chowdhury, जैसे Dr. Sabda ने बोला, broker is the weak link. Developer is doing what they are doing. Regulations are now there. Quality के बारे में भी रहना होता है. You know, there are warranties on the project. Investors always safeguard themselves. For buyers, broker is the link. So, do you think that broker, that link has been sorted out now? अभी address हो गया है या और क्या क्या हुआ? देखिए, तो रियल एस्टेट को मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा आपके माध्यम से। अब रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन भी है, रियल एस्टेट आईटी पार्क भी है, कमर्शियल भी है, सेकंड होम भी है, फार्म हाउसेस भी हैं, और देयर आर मैनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट। सो लाइक मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग जैसे फार्म कम्युनिटीज बनाते हैं, फार्म हाउसेस बनाते हैं, और विद ब्यूटीफुल पॉलिसीज। आप इसको मान के चलिए कि रियल एस्टेट के अंदर जो विश्वास हमें देना है, तब एज ए डेवलपर, मेन मैं इसमें जनाब ने दोनों बातें बहुत ही वैल्यूबल कही है कि डेवलपर को भी और जो ब्रिज है, ये किसी भी चीज़ का जो ब्रिज होता है बहुत मैटर करता है। अगर ब्रिज मजबूत है तो हर तरह की कामयाबी है। बट मैं एज ए सेकेंड जनरेशन जो हम लोगों ने सीखा कि विश्वास हमें देना पड़ेगा, विश्वास डेवलपर को अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। हमें इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज लानी पड़ेगी कि जिससे वो ब्रिज और मजबूत की तरफ बने और उसको इस पर ही फोकस किया जाए। आज इसीलिए तरह से सिर्फ विश्वास हम लोग अगर लाते हैं रियल एस्टेट में तो हमारी ग्रोथ डबल होती है। ब्रिज को ये समझना पड़ेगा, अगर हम एक माध्यम बन रहे हैं और उस माध्यम का डिलीवरी अगर सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं हमें नैरो माइंड से बाहर आना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको रेगुलर बिजनेस की तरफ लेके जाएं। ये सोच का फर्क है और ब्रिज बहुत मैटर करता है, क्योंकि सेफ्टी फॉर फंड्स एंड वैल्यू फॉर मनी ये हमारा एज अ डेवलपर कस्टमर को देने का राइट्स भी है और ये कस्टमर का अधिकार भी है। रेगुलेशन की बात कीजिए, आप उसको देखिए, डेवलपर के पास एक पॉलिसी होती है कि वो अपने से बेस्ट करे। जब ब्रोकर हमारे पास इन्वेस्टर को लाता है, एज ए बायर इन्वेस्टर हमारे पास आता है, तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। खासकर मेरे प्रोडक्ट में अगर मैं बात करूं तो हम लोग जैसे ही इन्वेस्टर हमारे पास आता है, हम उसको पहले दिन रजिस्ट्री कर देते हैं, ऑनरशिप उसके नाम होती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फिजिकल पोजीशन पहले दिन उसको देते हैं, तो हमारे यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आती। बट यस, एज ए इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम है और अब सिविलाइज हो रही है इंडस्ट्री, क्योंकि जो नई लोग सोच आ रही है, टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। और देखिए, अगर मैं एज अ डेवलपर ना कहूँ, एज अ बायर हूँ, ये हमारा अधिकार है। अगर हमने अपना पैसा कहीं भी लगाया, अगर हमने पैसा किसी भी विचार से अपना लगाया, तो देखिए एक सेफ्टी ही एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले दौर तक, आज मैं दुबई में बैठा हूँ और मेरी प्रॉपर्टी इंडिया में है, कहीं भी है, तो मुझे एक प्रोटेक्शन कुछ ही है। एज अ रामचंद्र हमने इस पॉलिसी को बहुत ही स्ट्रांगली फॉर द टाइटल, फॉर द मैं न्यू लाइफ जनरेशन या न्यू रियल एस्टेट जनरेशन की बात भी करता हूँ, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियरिटी, स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेस फ्री प्रोडक्ट आज की जनरेशन की
बेसिक से बेसिक नीड है। और हैप्पीनेस के लिए, एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न, बेस्ट रिटर्न के लिए एज ए डेवलपर मैं कहूँगा कि हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिए। पर अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है और पिछले 4-5 साल में ये बदलाव से इन्वेस्टर बहुत खुश है और हम इसको सपोर्ट करते हैं। एक जो सर ने कहा कि व्हाट इज रियल एस्टेट और दिस इज वन ऑफ द few asset which grows over the time, and it's a multifold growth we have seen. See, by definition, real estate has come from the two words. The real is the Latin word, which has been taken that says that it's actual, it's real, and you can possess it. And the estate word has come from the old French word of estate, which means status. The real estate is also a matter of pride for the buyer. That he is holding this real estate, he is holding this, he is owner of this. So that Status as a status symbol also. It's the real estate is there. True. Well, this is only a product where you get real work. Yeah. So it's an asset which is real, which you Yeah. possess, and it's a status symbol also, as you rightly said. जो क्या बोलते हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट है या जो लैंड है, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टाइटल विलेजेस, you are into plotted developments. How do you see this challenge? ये challenge, technology is now coming in, but still, for government departments, how do you see this challenge? स्पेशली अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें, एनआरआई में काफ़ी फार्म हाउसेस हैं, तो जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो एनआरआई में इनडायरेक्टली बाय फार्म हाउस। टाइटल का आपने बहुत ही ईमानदारी में क्वेश्चन किया, मैं इसको बहुत रिस्पेक्ट किया, आपको धन्यवाद भी दूंगा और हर आदमी इस क्वेश्चन को वैसे भी करता है। मेरा मानना है कि ये और डेवलपरों की हम बात करें, जहाँ बिल्डिंग्स की बात करें, कमर्शियल की बात करें, तो वहाँ तो बायस रेगुलेट हो जाता है। यहाँ पे जो लोकल का जो डेवलपर है, जो ग्राउंडेड आदमी है, जो सिस्टम से बंधा हुआ है, जो ऑनरशिप जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, जिस लोकेशन में वो काम कर रहे हैं, जो उसको जानता है, वही आपको उसमें मदद करता है। क्योंकि जितने भी कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं लोकल ग्राउंड पे डिपेंडेंसी फील करते हैं। आज आफ्टर कोविड भारत में सेकंड होम फार्म हाउसेस की एक नीड है। हर आदमी अच्छे वातावरण में, हर आदमी अच्छे माहौल मौके में रहना चाहता है। आज हर आदमी चाहता है जैसे वर्क फ्रॉम द होम हुआ, वर्क फ्रॉम द फार्म की पॉलिसी लाई जाए। तो जिस तरह से नीड बढ़ी तो लोगों ने अपने सवाल किए, कॉर्पोरेट से भी हमसे सवाल किया, HNI से भी हमने सवाल किए। तो मेरा उसमें यही कहना है कि भाई देखिए, जो डेवलपर है इसमें आपकी सबसे बड़ी मदद वही कर सकता है कि जिससे आपने टाइटल लिया। अगर आप एक ब्रोकर से डायरेक्टली प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो ब्रोकर एक अननोन प्रोडक्ट आदमी से आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है, मोस्टली ये प्रॉब्लम वहाँ पे है। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी जब काम करता है अपनी रेपुटेशन के लिए काम करता है, उसकी रेपुटेशन अल्टीमेटली डेवलपर की या किसी की रेपुटेशन की टाइटल से होती है। तो टाइटल तो डेवलपर का राइट है, वो आपको जो आदमी ग्राउंड से रिलेटेड होगा, जो ग्राउंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिलेटेड होगा। और अब तो भारत सरकार में हर गांव में, हर जगह सब कुछ टाइटल ऑनलाइन हो गया। और मैं तो कहूँगा, जैसे जनाब ने रहना की बात करी, गवर्नमेंट ने और बड़ी पॉलिसीज दी है, बदल रहा है, हमें आशावादी होना चाहिए। बहुत कुछ बदल रहा है और इस बदलते चीज़ों में सबका फायदा। करेक्ट, भारत बदल रहा है, बोल रहे हैं। तो यस, बट वन वैलिड पॉइंट इज कि जो वहाँ का रूटेड डेवलपर है, जो लोकल डेवलपर है, go straight to them because they are the ones who know the ground reality. जो बीच के लोग हैं, brokers हैं, sometimes they might not be the right people and they might not have the right titles also. Protection of the land, protection of the product is only come by good title. So you have been expert in dispute resolution for freehold properties. आपने बहुत सारे cases देखे होंगे. Top one maybe what has been the main problem that you might have seen in cases in general, the biggest problem of it? One of the biggest problem, which we have seen in common is lack of understanding and communication. Because, when you sign the dotted contract of sale purchase agreement, so the clause number 4.3, 4.2, all these clauses, the client is ignorant of many of these, and he signs the dotted line, assuming that okay, this is standard and this is, even though if it is standard, even though if you are taking it from the most reputed developer, that all the clauses has to be read in detail, and
understanding of that clause has to be very clearly defined by either by the developer or by the broker, or in certain cases by themselves also they should learn, because what's going to affect them in case of delay of payment, in case of default of payment, in case of let's say delay by the developer. So all these things are mentioned in there, but people normally don't take that effort to read the contract, because prior to my PhD in leadership, I have done masters in criminology and emotional intelligence. In a 100-page contract, one dot or comma can make entire comma redundant. One alphabet can change everything. If I tell you something that this belongs to our, or if I tell you something that this is yours, right? If you just remove y on that, this becomes ours. So now it's a joint ownership. So that one alphabet makes a big difference. Every dotted commas of contracts has to be understood in detail, read in detail enough, and then that the dispute reduces. See, of course, disputes are going to be in this world until the civilization is going to survive. That's always going to be there, but we cannot eliminate, we can reduce it. One another thing, what we see is that now, as Sir mentioned, we have a land record from 1857. Onwards, the land records are now in the system. That can be, verified. The due diligence of the permit, or what you say is registration of everything. So that has to be verified by the client. So certain homework of the client also has to be done. Not all the blame you put it on the developer, and then see if you create a situation in which someone does something wrong, you are equally responsible. Right. So if you don't do your part of it, and then blame other. Okay, now another thing also, that certain misunderstanding on deliverables are there, which can be reduced or eliminated by reading a detailed contract. You have a proper understanding. You have a brochure now. Every brochure, can be challenged in the court of law. So any developer printing any brochure of the property, whatever is mentioning, has to be delivered, or whatever is delivering has to be mentioned correctly. In other words, so all these things are in place now, and all the laws will always keep strengthening. It's always a cat and mouse game, or chor police game, what you say in India. So as they see the need, the laws come in place, but the basic understanding is the communication. The communication, ask as many questions you have in mind. The developer will answer, and with this, and what Sir mentioned about, that the farmhouses. Now, across India, the infrastructure has played a tremendous role. Some of the people I know, who have moved their office and their residential and everything to the remote location where earlier they used to go once or twice in a month, or even once in 2 months. Because of the infrastructure, now there is a 5G connectivity there, uninterrupted power is there, roads are good, necessity of is available in the nearby place. So people, and especially after post-COVID, they realize that we are living in the cubicles in the mega metro cities, and here we are having a king-size lifestyle, and everything is available, and why not utilize this? So definitely infrastructure has played a wonderful role and in this, but of course the communication and the due diligence of both sides has to be done proper, because from the developer side, if I tell you that a client comes with in the most sophisticated way and impresses the developer and he signs a contract, but if the developer has not done a due diligence on the client, maybe he will not reach till end. Maybe after 2 installments he will default. So all this due diligence from the developer and the client has to be done, and communication has to be done in a very micro way, progressively on each step, where any questions are there that can be addressed at that point immediately.
government is doing, industry is doing, bringing in laws, bringing in regulations. Our expert speaker here, Mr. Chaudhary, said कि go with the developer जो उस locality को जानते हैं, so that you get the right property, you get the right titles, you do not get misled on that. And as Dr. Sasa said, due diligence, read the contracts very carefully. Contract is one of the biggest documents that has to be read and followed by both the parties. Due diligence from the developer's end on the customer and by the customer on the developer, and contracts which become later turned into disputes. So great words of advice. Now, जैसे आपने mentioned that technology, online होना सब कुछ ना. Government is also bringing everything online, registration and everything. Industry is adopting PropTech, accelerated its adoption. From both the speakers, I would like to know, can technology be an enabler for the buyers and for the developers that we are talking about transaction? Yes, technology has played a very important role in this. See, earlier, let's say, go back, 20, 30 years, when you sign any SPA with any developer, you need to go and verify how, car that pahuncha, yes, the superstructure is ready, now this is going on, now this is going on, or you send some of your representative or a family member to view this. Now, progressive report, you can get it online from RERA report, because they have to submit progressive and certified by RERA, not certified by themselves. So that progressive reports can be viewed online. So no need for you to just go to view what level, construction level they have reached. The detailings are a different thing. But with this technology enabling, okay, now payment, especially for the NRIs, the payments can be transferred to them, or the reminders can be sent to them, and everything can be, most of the things they can on the dashboard they can see. In UAE, the RERA regulation is that the periodic payments which comes from the client goes into the escrow, and the first dime the developer will receive after 100% payment of the land and minimum 30% of the construction. So after that, they get the first dime from the escrow account. So escrow has also as a technology and an enabler in sorting out maintenance, and people have a comfort that okay, now there is a regulatory authority which views to this, so my supervision has reduced. It is not eliminated. Of course, what you need to supervise and what you need to know on the detailing of it, because the RERA will not determine that okay, what quality of tiles he has put, and that is a verification of the client. Apart from that, the construction and the superstructure and the compliance, especially on what level. See, earlier, with all due respect to all the developers, and there are one small segment of developers who always believe that whatever is the permission is there, we should be at least 10% more, and then we pay impact and once we clear it. So I always used to tell the developers that why your interest is going in at 10% more, which is spoiling your reputation, rather than stick to the compliance and strengthen your reputation. And one of the meeting I remember, in India, sitting with many of the developers, I told them that when you make a house, what does people do? So once they stay, वहाँ के रहते हैं, then ऐसे रहते हैं तो ठीक है, मगर वो क्या करते हैं? खाना खाते हैं, सोते हैं, ये करते हो. Then I said, one more thing in India, people do in the house, they worship also. Every house has if he is a Hindu family, has a temple, or whatever faith he believes in, he has it. If a Muslim also prays in the house 5 times a day, if he cannot go to the masjid, so he is praying there. When he is praying there, it is no more a house. It is a place of worship. So now, for a developer, I tell them that, if it is said in every faith that you give one brick in a mandir or a masjid or a church,
God will give you in multifolds. Now, same thing, when you remove it, you will still get the multifold, but on the other side, not in the heaven. So, this understanding of what you are giving, once it becomes clear on the objective is pious, then from the developer, because I know many developers originally from Ahmedabad, they build 2 floors and 3 floors. Sometimes they are not able to manage the impact or the later compliance, and it has to be demolished. Now imagine erasing 2 floors from the top, it destroys the life of the entire building. So all these things, with the RERA and all in technology in place has been reduced, and more harmony between the developer and the client has been created. This is my outlook. Completely agree. Technology has made life easier for all of us. We can monitor the customer can just go on the developer's dashboard. उनको पूरा status मिल जाता है क्या construction हुआ क्या permission हुआ सब कुछ everything. How do you see technology for developers, and is there a downside to it? उसका कुछ नुकसान भी है क्या? देखिए किसी भी यूनिट में टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती है इसका बेनिफिट सब कुछ ऑनलाइन आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कितने भी अच्छे डेवलपर से की उसका डैशबोर्ड एक सेकंड में बैठ कर कहीं भी देख सकते हो। ये सुविधा पहले ही डाउट होता डिपेंडेंसी रहती थी, आप एक डिपेंडेंसी नहीं लीजिए। तो टेक्नोलॉजी ने इस फॉर्म में भी एनएसएमटी डॉक्यूमेंट्स वेरी सुन टू सेफ्टी के साथ फार्म हाउस फॉर्मेलिटी बनाते हैं फॉर एडवांस पेपर। तो आप अगर हिंदुस्तान के किसी कोने बैठे हैं, हिंदुस्तान से बाहर किसी देश में बैठे हैं, तो एटलीस्ट थ्रू सीसीटीवी कैमरा यू कैन सी द प्रॉपर्टी, यू कैन सी द डेवलपमेंट। एंड आफ्टर सेल्स में जब आप प्रोडक्शन की बात भी करते हैं तो आजकल जैसे हमारा फोकस है कि भी आफ्टर सेल सर्विस हम चाहते हैं कि एज ए डेवलपर आफ्टर सेल सर्विस को हम ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं कस्टमर के लिए कि आपको प्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन मिले, आपको इन्फॉर्मेशन को मैनी थिंग्स और जो वहाँ पे हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि होता क्या है कि डेवलपर जब किसी चीज़ को देता है, जैसे जनाब ने बड़ा अच्छा कहा कि लास्ट में आर्डर को आ जाती है, अब वहाँ तक का चैनल को कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है। तो आज की डेट में हर जगह, चाहे वो डेवलपर पॉइंट हो, चाहे वो बायर पॉइंट हो, चाहे वो ब्रोकर पॉइंट हो, टेक्नोलॉजी ने हर जगह आपको इजीनेस दी है। और ये हमारे फील्ड जो फार्म हाउसेज की बात करते हैं या लैंड की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री पार्क की बात भी करते हैं या टाउनशिप की बात भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी बहुत इजीनेस दी है, बहुत इसके बेनिफिट्स मिले और इसका मोस्टली बेनिफिट बायर को मिला है। एज ए डेवलपर मेरा पर्सनल व्यू है, ब्रिज की बात भी करी, मैं भी कहता हूँ कि अगर हमारा ब्रिज मजबूत, मैं दोबारा इसको पॉइंट पर आ रहा हूँ कि ब्रिज मजबूत होगा तो बहुत कुछ बेटर होगा, बट कुछ मैनेजमेंट के भी रूल्स होते हैं। अगर मेरा मन है और मुझे अच्छा करना है तो हर पॉलिसी के तहत अच्छी सोच के साथ मैं उसको बनाने जाऊँ। हमने अपने 40 साल के इतिहास में रामरतन में इस चीज़ को महसूस किया है कि आप कोशिश करके अच्छी चीज़ भी दे सकते हो, अच्छा नाम भी कमा सकते हो और अच्छा एक टाइटल भी दे सकते हो। इसके लिए देखिए आज तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। प्रॉफिट तो देखिए ऐसा है कि अल्टीमेटली आज जिस तरह का सिनारियो है, खासकर फार्म्स या लैंड्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, 3 साल में पैसा आ जाता है, क्योंकि डिमांड बहुत, इंडस्ट्री की डिमांड, इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग की डिमांड, लैंड इज मदर। एंड एज ए डेवलपर आई ऑलवेज से कि भैया अगर आपको किसी भी चीज़ में नाम, काम और मेहनत से पैसा ग्रो भी करना है तो डिलीवरी से मदद हमें देना पड़ेगा, हमें फोकस करना पड़ेगा। और जिस तरह से आज भारत की तरफ लोगों का रुझान, मैं फिर इस बात कहूँगा, वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली नजर आ रही है कि हाँ चेंज हो रहा है, और वो चेंज हर तरफ से। डेवलपर ने अपना मन बनाया, ब्रोकर ने भी अपना मन बनाया, क्योंकि अनसिविलाइज सिस्टम था उसको सिविलाइज करने का, और कहीं ना कहीं बायर ने भी इस चीज़ को रियलाइज किया कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप ट्रैक रिकॉर्ड ऑनर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मत देखिए, अबाउट द पर्सन भी देखिए जो डिलीवरी देना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी फॉर्म में जो आदमी डेवलपर है वो डिलीवरी देना चाहेगा तो वहाँ रास्ते बनाएगा फॉर द रेपुटेशन एंड फॉर योर प्रॉफिटेबिलिटी। आफ्टर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बायर और द इन्वेस्टर, our name profitability increase. This is also karma, and for this karma we need to think only one thing. Again, buyer is God, and we need to care about it. When you say about profits, the profits are byproduct.
Yeah. Profits are never the source. So, when you deliver something good, profits are obviously going to come. And as what Sir said, technology, one more thing I would like to add, because I'm chairman in Dubai Chamber for entire building material trading group, which is one of the largest in the economy, because we are the feeders to the mega construction, all what you see in Dubai. I always tell in my speeches in chamber and across the world that, what materials which were used 20, 30, 40 years back in construction have completely changed. Like, the glass facades. Even in glass, when you have double glaze, you have films and so many things. The buildings are getting lighter and more stronger. So the materials used in the construction, the technology has helped to change many things. Right now, if you see in Dubai, you have a flat slab. Still in India, not every development has a flat slab. They still have a column and beam structure. And then in having a flat slab, you can increase your number of floors because your height increases. But see, these are all technological upgradation which has helped in the building, in the construction industry, and every component you see in the building which is being used in the building has evolved in last 30, 40 years, and that technology has played a major role. Another thing, and what it's leading is tremendously, it's going to be different, because right now, you have 3D printing housing construction happening. So, 3D printing is going to completely change the landscape of how we use. So, affordable housing, when you say sometime, G+1 or 2 in Africa, we are working on one project where, you can build a house in 2 months once the plinth is ready. It is with graniting and wire mesh and foam. It has more resistivity against earthquake. It is 15-20% cost effective, and it is 20% lighter, and also it is 5 degree more insulative. Outside temperature is 40, inside you will feel only 35. So, all this upgradation in the technology has definitely helped the construction industry. Correct. So technology not only in transaction but also in terms of construction has become a very game changer for the industry. टोटली मैं आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि जिस तरह आदमी कंक्रीट से हटना चाहता है, हम कोविड के बाद, नाम ना लेना चाहूँ, कोविड के बाद जिस तरह से बदलाव नेचर की तरफ लोगों का झुकाव है, फार्म हाउस की तरफ झुकाव है, तो इसमें एक और बदलाव आया कि लोगों ने कंक्रीट से अपने आप को हटाना चाहा। तो थ्रू टेक्नोलॉजी आपके पास घर बनाने के काफ़ी ऑप्शंस हैं, और हम लोग जैसे फार्म कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, तो हम लोग नेचर का भी ख्याल करते हैं, इन्वायरमेंट का भी ख्याल करते हैं, ग्लो क्योंकि वाटर का भी ख्याल किया जाता है। तो अब जो टेक्नोलॉजी है उसके तहत काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं। आपका ऑप्शन फॉर होम बदल रहा है, प्लांटेशन का प्लान बदल रहा है, मतलब बहुत कुछ चीज़ें, वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, सोलर से आपको काफ़ी बदलाव है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इन सब चीज़ों के बदलाव से आपकी हेल्थ में और वेल्थ में दोनों में बदलाव है, और लोगों का झुकाव रियल इस्टेट की तरफ, बदलते रियल इस्टेट की तरफ, अब नेचर को ध्यान में रख के घर बनने लगे हैं। आज हम लोग जो भी कम्युनिटीज बनाते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि 40 to 60% हम लोग हॉर्टिकल्चर की तरफ जाए, ग्रीन एरियाज की तरफ जाए, प्लांटेशंस की तरफ जाए, जिससे इन्वायरमेंटली भी बेनिफिट्स मिले, इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिले, और मेन बेनिफिट जो आदमी उसको यूज कर रहा है उसको मिले, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। Correct. So great tips from our speakers when we say actionable guide to real estate buying is, first is your due diligence. Make sure the developer you are buying the property, connect with the developer directly, as Mr. Chaudhary said. As Dr. Sasa said, contract are the most important document for the developer as well as for the buyer. Go through them very carefully. If you need a professional help, take that. Lastly, technology is an enabler for the transactions, for the projects themselves. Industry regulations are coming in. Industry is getting regulated in India, especially. Laws are there to enable the buyers as well as the developers. And as Dr. Chaudhary said, that it is the mindset that is changing now. The developers' mindset is also changing now. They are in the game to create their reputations.
and they are the people to for the buyers to look forward. Before we close this session, from both our speakers, what is your words of wisdom for the peers जो आपके साथ और इंडस्ट्री में लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है, और जो यंग जनरेशन आ रही है उनके लिए क्या आपकी एडवाइस है? Before I answer that your question, I would like to add one more thing, that all what we discussed now on the infrastructure, on the post-COVID requirement on health and wealth and everything, that one thing has emerged that there is a decongestion of the mega metro cities. And I'm working on one project, on my thesis as reverse migration. Reverse migration. Earlier migration was happening on the economic values. My father came to UAE in 1958, looking at the economic values. He went to Bahrain in 1944. From 44 to 58, he was in Bahrain. Then he came here, looking at the economic values. People migrate to US, to UK, purely because of the economic values. And within India also, the polarization of migration to the mega metro, earlier there were four, like Delhi, Bombay, Calcutta and Chennai, was based on economic values. चलो शहर में जाएंगे तो रोजगार मिलेगा. So on based on economy. Now the migration is going to be based on water availability, and especially because my subject is water. I am a member of World Water Council and Middle East Director of IRCS, that's International Rainwater Catchment Systems Association, which is an United Nations Environment Protection. So water is such an element of nature that which one cannot survive without that. Other elements of nature you can still manage, but without water you cannot. And the pressure on the mega metro is such that all the municipal corporations of these mega metros are struggling to meet the demand. And see, if every Indian decides to go to Bombay on one single day, they can do it. But now imagine the pressure on the civic system. Everything will collapse. So with this evolvement of infrastructure, technology, and the COVID, people now want to the majority factor which accelerated their decision on this is COVID, that okay, let's go towards more greener area. Earlier also they thought of going on a that was the second home. Now Second people are home. high with hybrid working. Yes. And that time, we had a thought process that, okay, our basic necessity will not be fulfilled over there. Like energy and so many. But now, India is power suffice, 5G network is everywhere. So all these things, the enablers have played such a major role in decongestion the mega metros. And with this decongestion, what has happened? The tier 2, tier 3 cities have started developing. Earlier, you see, the developments were only concentrated on these 4, 5, 7 cities. Now, you go in a tier 2 village, you don't find tier 2 city, you don't find much difference. The parameters of city, metro city, town and village in the US is only based on population. Because what infrastructure is there in the New York City is available in the smallest village of US. So only definition was on infrastructure, on the number of population. In India, there are two parameters: number of the population over there, and second was the amenities. Okay, ये गांव में power आ गया है, यहाँ पे telephone आ गया है. That was certain, 30, 40 years back. This was the parameter. Now that has been eliminated, and now only the population is the parameter on naming it as a town, village or a city. Infrastructure wise, India has developed uniformly, and you go in the remotest part of India, you have a network. Apart from few mountains in Himalayas where there is no habitat because I am a mountaineer, and I go there and I detoxing myself from the mobile phone. So that's a different thing. But apart from that, entire Indian landscape is infrastructure ready for everything, and so that has played a very important role. And now coming to your question on advisory to the new generation, I think the new generations are quite fortunate. I will say the first thing they are having in platter of many things. As I am the
continuing the legacy of my father. What hardship my father had and bad when he came here, I am miles away from that. Or rather, we are living in much luxury than what they were living. Secondly, the experience they are getting. See, when a person is a starter, he does not have any experience or a mentor in-house. Now the second generation and the new people coming in this business from the same legacy, they have role models in their family, role models in the outside also, and that experience, and which is shared experience. So that helps them to make lesser mistake or learn faster. So these are the things. But of course, whatever height my father achieved, I have to work hard to scale my own height. So that cannot be replaced. That hard work has to be done, but they will achieve much higher mileage in the same trust what their previous generation did. So that's an advantage. And with the exposure of internet, with the exposure of technology, with the exposure of materials available with them, they can deliver a better product. Correct. So, जैसे डॉक्टर सामना ने बोला कि the next generation is fortunate because they don't have that many challenges which previous generations had, but their hard work तो उनको करना ही पड़ेगा. What is your advice to the new generation which is coming in? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से बहुत सहमत हूँ कि हम दोनों सेकंड जनरेशन हैं, और जो भी बात आपने कही मैं उसको ये मानता हूँ कि मेरी भी दिल की बात है कि हर सेकंड जनरेशन पे एक आगे बढ़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक व्यक्तिगत दबाव और वो होना चाहिए. ये भी ठीक है कि हमको बहुत सी चीज़ें और आने वाली जनरेशन को और ईजी होगी, बट जैसे जनाब ने कहा कि अपनी इस प्रॉब्लम को निभाने के लिए आदमी को खुद आगे बढ़ना. तो सेम विद अस, हम लोग भी सेकंड जनरेशन है. आज 40 साल की इस व्यापारिक इतिहास में हम लोग जो डेवलपर्स की पॉलिसीज को देखते हैं या प्लानिंग को देखते हैं और पुराने वाले दौर के लोगों को देखते हैं, तो मुझे एक ही चीज़ से याद आती है, पुराना आदमी आज भी लड़ाई लड़ता था स्वाभिमान की. हमें उसी विचार को बिजनेस में अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिससे हम उस थॉट के साथ किसी भी बिजनेस को आगे ले जाए. मैं दो बात आपसे कहना चाहूँगा जो जनाब ने की टू कॉर्पोरेट एक्टिविटीज, जैसा दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली से गुड़गांव नितिन गडकरी साहब ने बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, और कोशिश है कि जैसे बॉम्बे पुणे इस तरह से तो दिल्ली जयपुर कनेक्ट हो रहा है, और दिल्ली से बॉम्बे आज 12 घंटे के अंदर आप ड्राइव करिए. क्या फैंटास्टिक ड्राइव है जनाब, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, क्या इंडस्ट्री के अलॉटमेंट दिया, आपको एयर सर्विस से लेकर सारी प्लानिंग दी. तो अब हर आदमी चाहता है कि हम बिजनेस में डिवाइड करें, मोस्टली चीज़ें ऑनलाइन हो रही, मोस्टली चीज़ें बदल रही, और ये सब चीज़ें नई जनरेशन की बहुत बेनिफिशियल है, नई जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट है. देखिए, कभी भी जब आप रिमोट्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पे डेवलपमेंट आती है, बेसिक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी टुवर्ड द इन्वेस्टर एंड द बायर इज ऑलमोस्ट डबल without putting more efforts from the buyer side. So government and like भाई साहब also से infrastructure आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका बेनिफिट हर आदमी को मिलेगा. नई जनरेशन या डेवलपर्स के लिए देखिए, मेरा तो एक विचार है कि नई जनरेशन से एक सुझाव है, अगर कहीं भी पैसा लगा नहीं सकते, इट्स नॉट दैट वी आर इनसाइड पीपल और इनसाइड डेवलपर्स, हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग जड़ी हुई चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों से पैसा लगाते थे, रियल एस्टेट में पैसा लगाते थे, तो एटलीस्ट ऑनेस्टी रहती है. आज नई जनरेशन कुछ जगह पैसा जहाँ लगा रही है, चाहे वो कोई भी माध्यम, हाँ उनका प्रिंसिपल हो रहा है. तो हमें ये देखना है कि उनका प्रिंसिपल किसी भी तरीके से डूबे ना, उनको नुकसान ना हो, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत खास की वो मेहनत कर रहे हैं. तो बहुत सी ऐसी जगहों में उन लोगों ने पैसा लगाया जहाँ पर प्रिंसिपल भी उनका आज वैल्यू नहीं करता. तो मेरा यही आपके माध्यम से कहना होगा कि वापसी आएगी रियल एस्टेट की तरफ, जड़ों से जुड़ी. रियल एस्टेट इज अ रियल इंडस्ट्री जहाँ पे आपको ग्रोथ है, आपको बेनिफिट्स है और आपको एक सही माध्यम से इनकम है. स्टॉक मार्केट है, वो है, सब इन्वेस्टमेंट है, काफी but चीजें they will मैं not किसी प्रोडक्ट के पर्टिकुलर बारे में नहीं कहूँगा, बट आज भी मेरा मानना ये है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं एज ए सेकंड जनरेशन, आज मैं दिल्ली से दुबई में आया हूँ, तो उसी रियल एस्टेट के बलबूते जो रियल एस्टेट आज हमारे माँ बाप ने बना के उसको दी, और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी अगर किसी सेक्टर में हुई है वो सिर्फ रियल एस्टेट.
आप पैरामीटर्स देख लीजिए, आप किसी भी सेक्टर के पैरामीटर्स देख लीजिए, जिसने भी मैक्सिमम ग्रोथ करी है वो रियल एस्टेट ने करी है। और आप बिलीव कीजिए कि जो मेरे पास आज इन्वेस्टर लॉबी आती है, जो लोग उनसे वेल्थ मैनेजर्स बात करते हैं, तो a person with the age of 24 to 30, 35 आज वो रियल एस्टेट को लाइक करता है। वो रियलाइज कर रहा है कि भाई मेरे को अगर एक लॉन्ग में सेफ्टी चाहिए तो यही वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग को एक बेटर सेफ्टी आने वाले कल, और यही प्रॉपर्टी हम अगर सेव करते हैं तो वो भी अपनी जनरेशन को डिलीवर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। So going back to the foundation, going back to your roots is something that Mr. Chaudhary recommends. कि progress करिए, technology अपनाइए, आगे बढ़िए, but do not forget your roots. And what Dr. Sasa is saying, that learn from your legacy, take the risk, go forward, but again, you have been served on a platter, so make the best out of it, and yes, take the industry forward too. But you know, one thing I would like to say when I say platter, because when I was studying in my college in Ahmedabad, I did my schooling also in Xavier's in Ahmedabad and then college. I had a very strict instruction from my father not to loiter around in the free time. So I had a job. I had taken I'm talking about between 87 to 90 when I was in college. That time Syntex water tanks were very newly introduced. HDP water tanks. Syntex was the first brand. So that's why you know it has been synonymous as a Syntex. So HDP tanks, and I was doing the marketing of that, and that was my job. So you know that has paved and helped me in my business over here. But again, you know, we as a legacy holder, you know, we have a responsibility that what has been given to us, we have to preserve it and enrich it and give it to our next generation, what they are proud to take and carry forward. So you know, this is again, as a platter is one thing, but as a burden also. Yes, it is a burden. Because you know, this is amanat what we have got from my parents, and create something worthwhile to pass it on to the next generation. So on those very wise words, thank you so much, Dr. Sasa, for being here with us. Thank you, Mr. Vijay Chaudhary, for being here with us, sharing your wise views. We will have a group photo. It was an absolute honor to Same here. chat with Mr.